अमेरिका के चुनावों में ट्रंप के लिए राहत भरी खबर है। न्यूयॉर्क टाइम्स के सर्वे में ट्रंप को 2 अहम स्विंग स्टेट्स में बढ़त दिखाई गई है। वॉशिंगटन पोस्ट के सर्वे में भी ट्रंप को 4 स्विंग स्टेट्स में आगे दिखाया गया है। अमेरिका के कई राज्यों में अर्ली वोटिंग हो रही है और साथ ही साथ एब्सेंटी बैलेट से भी वोट डाले जा रहे हैं। ट्रंप को यदि राष्ट्रपति बनना है तो उन्हें स्विंग स्टेट्स में 51 इलेक्टोरल वोट्स की जरूरत है। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव अब बेहद करीब हैं और जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप को कमला हैरिस पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अमेरिका में हो रहे ताजा सर्वे में डोनाल्ड ट्रंप को कमला हैरिस पर बढ़त बताई जा रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स के ताजा सर्वे में एरिजोना में डोनाल्ड ट्रंप को 42% वोट मिल सकते हैं, जबकि कमला हैरिस को 48% वोट मिलने की संभावना है। वहीं जॉर्जिया में ट्रंप को 51% और हैरिस को 49% वोट मिलने की संभावना जाहिर की गई है। ज्यादातर सर्वे ट्रंप के पक्ष में ही झुके हुए दिखते हैं। हालांकि मुकाबला बेहद कड़ा दिखाई जा रहा है और वोटर्स आखिरी वक्त में भी यदि पलट गए तो जीत को हार में तब्दील होने में वक्त नहीं लगेगा। पोलिंग एग्रीमेंट के सर्वे में सभी स्विंग स्टेट्स में ट्रंप को बढ़त दिखाई गई है। पोलस्टार नेट के सर्वे में एरिजोना और जॉर्जिया में ट्रंप को आगे बताया गया है, जबकि वॉशिंगटन पोस्ट के सर्वे में पेंसिल्वेनिया, मिशिगन और विस्कॉन्सिन में हैरिस को बढ़त दिखाई गई है। And with your support on November 5th, America will be bigger, better, bolder, richer, safer, and stronger than ever before. This election is a choice between whether we will have think of this, 4 more years. Could you stand it? It's 4 more years of incompetence and stupidity and failure and disaster, or whether we will begin the 4 greatest years in the history of our country. I think we have a real chance. अमेरिका के कई राज्यों में अर्ली वोटिंग चल रही है। एब्सेंटी बैलेट से भी वोटिंग की जा रही है और यूएस टुडे व सफोक यूनिवर्सिटी में सर्वे में अर्ली वोटिंग में कमला हैरिस को 53% वोट मिलने की संभावना जाहिर की गई है। अमेरिका में 7 स्विंग स्टेट्स हैं। स्विंग स्टेट्स में 77 इलेक्टोरल वोट्स हैं। कमला हैरिस को चुनाव जीतने के लिए स्विंग स्टेट में 44 इलेक्टोरल वोट्स की जरूरत है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव जीतने के लिए स्विंग स्टेट से 51 इलेक्टोरल वोट्स की जरूरत होगी। डोनाल्ड ट्रंप को ज्यादा इलेक्टोरल वोट्स की जरूरत है और इसलिए वो लगातार स्विंग स्टेट्स में रैलियां कर रहे हैं। I'm here today with a message of hope for all Americans. With your vote in this election, I will end inflation, I will stop the invasion, and I will bring back the American dream. Our country is being crippled and destroyed by Kamala Harris. Kamala. How the hell did that ever happen? How did that ever happen? The guy had 14 million votes. I'm no fan of his, by the way. But he had 14 million votes. She had none. She was the first to lose. 22 people. She was the first out. She never made it to the great state of Iowa. Never made it. And, well, you know, they talk about it. She is a threat to democracy. I mean, that's really it. She's a threat to a lot of things, but that's the way it has to be, because we're winning by a lot. We're leading by a lot. We're leading in the polls. Every single state looks like we're doing well. डोनाल्ड ट्रंप ने अवैध प्रवासियों का बड़ा मुद्दा बनाया है और ये मुद्दा वोटर्स के दिल तक पहुंचता हुआ भी नजर आ रहा है। अवैध प्रवासियों के मुद्दे के बाद ही ट्रंप को सर्वे में बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। Problem we have, not inflation. Inflation's terrible. It's a country buster, and the economy, all those things. But I happen to think that what they've done at the border to our country by letting millions and millions of people in, totally unchecked and unvetted, I think it's the worst thing. Including murderers, drug dealers, people from prison. They opened up their prisons of the world into our country. I think it's the worst thing anyone's ever heard.
and a lot of terrorists are coming in. Record numbers of terrorists. Nothing good can happen. Nothing good can happen. After all the catastrophes she has caused, Kamala Harris can't say one thing that she'd do differently from Sleepy Joe Biden. डोनाल्ड ट्रंप ने अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करने का वादा किया है। लोगों के बीच पहुंचकर महंगाई और ज्यादा टैक्स जैसे मुद्दे उठा रहे हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि महंगाई कम करेंगे और लोगों को टैक्स से राहत देंगे। Yesterday, it was announced that inflation surged viciously again last month, coming in at a much higher number than anticipated. Your food prices went way up, higher than expected. Your rent and housing costs went up much more than expected. Your car prices went through the roof. Yet Kamala Harris has no plan to fix it. You ever hear her? She goes, well, no, we did everything wonderfully. The place is falling apart. Then she's got ideas. I know what I'm going to do. Why didn't she do it 3.5 years ago, right? Kamala has already cost the typical family $29,000 with her horrible inflation and the cost of inflation. Yet she said this week, when asked the question, that she can't think of one thing she could do differently, right? डोनाल्ड ट्रंप अर्थव्यवस्था और अवैध प्रवासियों का मुद्दा उठा रहे हैं और कमला हैरिस ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप यदि प्रेसिडेंट बने तो हेल्थ केयर सिस्टम तबाह कर देंगे। We have many, many seniors in our country where their Social Security check is their only form of income. It's everything and the only thing they have to live on, to pay rent, groceries, all of that. And so we must protect Social Security. If you look at Donald Trump's Project 2025, the plan that they have if he is elected or re-elected president, it would attack Social Security, it would attack Medicare. And back to the point about just what is in the interest of dignity. The President of the United States should have as one of their highest concerns the dignity of the American people. अमेरिका के चुनावों में कमला हैरिस के लिए बराक ओबामा भी वोट मांग रहे हैं और अपनी रैलियों में डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों पर सवाल भी उठा रहे हैं। लाइव टाइम्स पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ।